Good morning, students. Today we shall begin with the next chapter, Human Settlements, Chapter 10, Unit 4. So, the name of the chapter is Human Settlements. What do we mean by the term settlement? By the term settlement, we mean a place or location where human beings reside. Now, the cities we all live in, the villages, even the tribal areas are all human settlements. So, this chapter brings out the entire essence of the book. It is a mandatory topic because we are related to human geography, and everything that links us with humans is studied in this book. So, here you can see as our book defines human settlements as the study of human settlements is basic in human geography because the form of settlement in any particular region reflects human relationship with the environment. So, why do I say the study of human settlements is basic to human geography? Because whatever the type of settlement is present in a particular region, it reflects the relationship of human beings with their environment. Now, what I mean with the statement that human settlement reflects the human relationship with the environment is, if you see how the tribal people live in a place, they always live in a place where there is availability of natural resources, where water is present, their other means of sustainability are present over there. Farmers in a village, they will stay in areas where there are fertile plains and where there is availability of water or means of irrigation are available. Now let us look at the situation of cities. In cities, we would like to stay in a place where there are jobs. So here you can see there's a factory and all the settlements are close by. If we were to open a factory, it will naturally depend on the availability of resources. So this is what I mean when I say that settlements reflect human relationship with the environment. We see that human settlements, they are defined as a place inhabited more or less permanently. These houses may be designed or redesigned, buildings may be altered, functions may change, but settlement continues in time and space. There may be some settlements which are temporary and are occupied for short periods, maybe a next is classification of settlements. Settlements may be divided into two, rural and urban, but there is no consensus on what exactly defines a village or a town. Although population size is an important criteria, but it is not a universal criteria since many villages in densely populated countries of India and China, they have population exceeding that of some towns of Western Europe and United States. The basic difference between towns and villages is that in towns, the main occupation of the people is related to secondary and tertiary activities, whereas in villages, most of the people are engaged in primary occupations such as agriculture, fishing, lumbering, mining, animal husbandry, etc. So, at one time, people living in villages pursued only agriculture or other primary activities. But presently, nowadays, in developed countries, large section of the urban population, they prefer to live in villages even though they work in the cities. Now, there's third category, suburbanization. What is suburbanization? It is a trend of people moving away from congested urban areas. This is in this block. It is a trend of people moving away from congested urban areas to cleaner areas outside the city in search of better quality of living
important suburbs develop around major cities, and every day thousands of people commute from their homes in suburbs to their places, workplaces in the city. तो काम तो वो करते हैं सिटी के अंदर लेकिन रहते हैं सिटी के बाहर. This is known as suburbanization. Petrol pumps are considered as a lower order function in the United States, while it is an urban function in India. Even within a country, rating of functions may vary according to the regional economy. Facilities available in the villages of developed countries may be considered rare in villages of developing and less developed countries. So, what you may call rural or urban, their criterias may differ from region to region, from developed to a developing countries. The facilities provided may be very much different. So, this is what we call dichotomy of rural and urban areas because we don't have a clear-cut classification of the two. Next is types and patterns of settlements. There are two types of settlements. One is dispersed and second is nuclear or compact, as you can see in the diagram below. Settlements may be classified by their shape, pattern types. The major types classified by shape are, so first was compact or nuclear type. These settlements are those in which large number of houses are built very close to each other. Such settlements develop along river valleys and in the fertile plains. Communities are closely knit and share common occupations. तो समझ में आया है कॉम्पैक्ट और न्यूक्लियर सेटलमेंट्स वो होते हैं जहाँ बहुत सारे हाउसेस एक साथ बने होते हैं और ये कम्युनिटीज़ ज़्यादातर कॉमन ऑक्यूपेशन को शेयर करती है. So just like in nuclear families, people live in a closely knit society, है ना. न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी हम देखते हैं कि इंडिविजुअल फैमिलीज़ रहती हैं. उसी तरह ये भी जो न्यूक्लियर सेटलमेंट्स होते हैं ये इंडिविजुअल फैमिलीज़ रहती हैं लेकिन उनके घर पास पास बने होते हैं. नाउ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज आर most of the river plains of monsoon Asia have compact settlements. Even in the plains of India, China and Thailand, large nucleated villages is a common sight. The quartz plains of Japan has the largest concentration of compact settlements. Second is dispersed settlements. In these settlements, houses are spaced apart. डिस्पर्स सेटलमेंट्स में घर बहुत दूर दूर होते हैं, अक्सर उनके बीच में फील्ड्स होती हैं. दूसरा जो है एक जो उनका इम्पोर्टेंट जो है ना कि कई बार ये सेटलमेंट्स किसी मंदिर की वजह से या कोई मार्केट की वजह से भी डेवलप हो जाते हैं. मे बी कोई कल्चरल फैक्टर हो उनके पीछे, उसकी वजह से ये सेटलमेंट्स डेवलप हो जाते हैं. Such settlements are found in sparsely populated areas, है ना, जहाँ पॉपुलेशन कम होती है. The size of the fields is large and the farmer often constructs his house in the field itself. For example, wheat growing areas of USA, Canada and Australia. In the areas of plantation agriculture, in Asia and Africa also we find these settlements. And in India, especially in North Karnataka, Himachal Pradesh, Sikkim and hilly areas of northern part of Western Bengal also we find dispersed settlements. Now we'll study about rural settlements and factors which affect the location of these settlements. So rural settlements are closely and directly related to land, and they are, we know, dominated by primary activities such as agriculture, animal husbandry, fishing, mining, etc. These settlements are relatively small, and the factors affecting rural settlements are, first is water supply. So water is very important for all primary activities, and usually we see that rural settlements are located in those areas where there are water bodies such as rivers, lakes, springs, where water can be easily obtained. Sometimes the need for water drives the people to settle in
अदरवाइज इवन इन डिसएडवांटेज साइट्स, कभी कभी ऐसी साइट्स होती हैं जो सूटेबल नहीं होती रहने के लिए, वहाँ बहुत स्वैम्पी एरियाज होंगे या कोई रिवर बैंक्स होंगे, लो लाइंग रिवर बैंक्स होंगे जहाँ पे फ्लड्स के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी लोग सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी वहाँ अवेलेबल है। नाउ मोस्ट वाटर बेस्ड वेट पॉइंट सेटलमेंट्स हैव मेनी एडवांटेजेस such as water for irrigation, for all their other activities, bathing, cooking, etc. Here you can see rivers and lakes can be used to irrigate farmland. Water bodies also have fishes which can be caught for diet, and navigable rivers and lakes can be used for transportation. So these river and lakes can be used for transportation, and fishes can be caught easily which are further sold in the market. So it becomes one more occupation for the people living in the rural areas. Second is land, availability of land. People choose to settle near fertile lands which are suitable for agriculture. Barren lands, they are not suitable for agriculture, so those lands don't attract people. In Europe, villages grew up near rolling country, avoiding swampy, low-lying lands, while people in Southeast Asia chose to live near low-lying river valleys and coastal plains suitable for wet rice cultivation. These areas are suitable swampy areas and low-lying areas where water is available in plenty. So these areas are good for rice cultivation. Early settlers chose plain areas with fertile soils. Third is upland areas. Now upland areas are higher surfaces, which those areas which are prone to flooding. In those areas, people try to choose those areas which are on higher level so as to prevent themselves from being flooded away. So upland which is not prone to flooding was chosen to prevent damage to houses and loss to life. Thus, in low river basins, people choose to settle on terraces and levees, which are dry points. तो जो ड्राई पॉइंट्स होते हैं उन एरियाज़ के, वो कोशिश करते हैं वहाँ पे अपने घर बनाएं. इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स near marshy lands to protect themselves from flood, insects and animal pests. स्टिल्ट्स वो जो होते हैं ना, बैम्बूज के बने होते हैं, बैम्बूज लगा देते हैं नीचे, उसके ऊपर वो अपना घर बनाते हैं, तो दैट इज स्टिल्ट्स. तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में लोग बाग स्टिल्ट्स पर भी अपने मकान बनाते हैं रहने के लिए. नेक्स्ट इज बिल्डिंग मटीरियल. द अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटीरियल मे बी वुड, स्टोन नियर द सेटलमेंट्स is another advantage to the people. So they try to make their houses where building material is also available. Early villages were built in forest clearings where wood was plentiful. तो जो पुराने सेटलमेंट्स हैं वो फॉरेस्ट क्लियरिंग्स में भी लोग बनाते थे क्योंकि वहाँ बहुत वुड अवेलेबल होता था. इन लोएस्ट एरियाज ऑफ चाइना केव ड्वेलिंग्स वर इम्पॉर्टेंट एंड अफ्रीकन सवानाज बिल्डिंग मटीरियल्स वर मड ब्रिक्स. And the Eskimos in polar regions, they used ice blocks to construct igloos. तो ये समझ में आया building materials. Next is defense. During the times of political instability, war, hostility of neighboring groups, villages were built on defensive hills and islands. In Nigeria, upstanding inselbergs formed good defensive sites. In India, most of the forts are located on higher grounds or hills. तो कई बार डिफेंस की वजह से भी अपने आप को बचाने के लिए भी लोग सेटलमेंट्स इस तरह से डेवलप हो जाते हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट एक शेप अडॉप्ट कर लेते हैं. जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स हैं जो बहुत हाइट पे बने हुए हैं, हायर ग्राउंड पे, हिल्स पे बने हुए हैं. तो वो इसलिए कि वो अपने आप को जिससे प्रोटेक्ट कर सकें. तो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग रीजंस रहे अपने आप को कैसे वो बचा सकते हैं, एंड दे बिल्ड देयर हाउसेस अकॉर्डिंग टू दैट. देन लास्ट इज प्लान्ड सेटलमेंट्स. प्लान्ड सेटलमेंट्स जो प्लान किया है, मे बी गवर्नमेंट ने, म्यूनिसिपैलिटी ने लोगों के लिए वहाँ रहने के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है. तो साइट्स दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियसली चोजन बाय द विलेजर्स देमसेल्व्स.
but they are planned settlements. They are constructed by governments by providing them shelter, water, and other infrastructures on these acquired lands. The scheme of villagization in Ethiopia and the canal colonies in Indira Gandhi Canal command area in India are some of the good examples. इंदिरा गांधी कैनाल है वो भी बिल्कुल प्लांट सेटलमेंट है. वहाँ पे पहले बरसात बिल्कुल भी नहीं होती थी, तो पीपल डिड नॉट वांट टू स्टे इन दैट डेजर्ट एरिया ऑफ इंडिया. बट देन गवर्नमेंट आफ्टर द मेकिंग ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल water was available in abundance, and then people started shifting there, and now we can grow crops, cultivation is possible, so that has attracted many people. So this is a plant settlement. Okay, next is rural settlement patterns. Now patterns of rural settlements reflect the way the houses are sited in relation to each other. The site of the village, the surrounding topography and terrain influence the shape and size of a village. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक रूरल सेटलमेंट पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं. Now rural settlements, they may be classified on the basis of a number of criteria. First is on the basis of setting. The main types are plain villages, plateau villages, coastal villages, forest villages and desert villages. On the basis of setting, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है. मे बी प्लेन विलेजेस छोटे मोटे डेवलप हो गए हैं, कोई प्लेटोज पे डेवलप हो गए, कोई कोस्टल एरियाज में डेवलप हो गए, कोई फॉरेस्ट एरियाज में डेवलप हो गए, कोई डेजर्ट्स में डेवलप हुए. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. देयर मे बी फार्मिंग विलेजेस, फिशरमैन्स विलेजेस, लंबरजैक विलेजेस, पैस्ट्रल विलेजेस एक्सेट्रा. तो कुछ हो सकता है फार्मिंग जहाँ पे खेती बाड़ी बहुत होती है, कोई वहाँ पे फिशेस को कैच करते हैं, मछुआरे हैं. लंबरजैक, कुछ लंबरजैक विलेजेस हैं. लंबरजैक जो लोग लकड़ी को काट के और लॉग्स में काट काट के उसको बेचने का काम करते हैं. और कुछ पेस्ट्रल विलेजेस डेवलप हो गए. देन थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स ऑफ द सेटलमेंट्स, है ना. उनका शेप डिफरेंट होगा. मे बी there may be geometrical forms and shapes such as linear, rectangular, circular, star-like, T-shaped village, double village, cross-shaped village, etc. So on the basis of forms and shapes of the settlements, we give them their name. So let us discuss them one by one. First is linear pattern. In such settlements, houses are located along a road, railway line, river, canal edge of a valley or along a levee. बिल्कुल एक लाइन में जब सेटलमेंट्स डेवलप हो जाते हैं, चाहे सड़क के किनारे, कोई नदी के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, या कोई कैनाल है उसके किनारे डेवलप हो जाते हैं, या कोई लीवी है वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, तो इन्हें हम लीनियर पैटर्न कहते हैं. सेकेंड इज रेक्टेंगुलर पैटर्न. Such patterns of rural settlements are found in plain areas or wide intermontane valleys. The roads are rectangular and cut each other at right angles. Next is circular pattern. Circular villages develop around lakes, tanks, and sometimes the village is planned in such a way that the central part remains open and is used for keeping the animals to protect them from wild animals. तो कई बार वो सर्कुलर पैटर्न में विलेजेस डेवलप हो जाते हैं कि चारों ओर मकान आ जाते हैं, मे बी उसके बीच में कोई लेक है या कोई टैंक है, या फिर बीच में ओपन स्पेस छोड़ते हैं कि अपने एनिमल्स को रखेंगे वहाँ पे जिससे वाइल्ड एनिमल्स से उनको बचाया जा सके. नेक्स्ट इज स्टार लाइक पैटर्न. व्हेन सेवरल रोड्स कन्वर्ज, स्टार शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप बाय द हाउसेस बिल्ट अलोंग द रोड्स. जब बहुत सारी रोड्स मिल रही हैं, ये देखो ये स्टार पैटर्न है, जब बहुत सारी रोड्स चारों ओर से मिल रही है तो वो एक स्टार पैटर्न ले लेता है. नेक्स्ट इज टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड और क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट्स. टी शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप एट ट्राई जंक्शंस ऑफ द रोड्स. जैसे टी बन गया वहाँ पे, जंक्शन हो गया वहाँ, ट्राई 3 रोड्स आके मिल गई तो टी शेप हो जाएगा. While Y-shaped settlements emerge as the places where 2 roads converge
On the third one, and houses are built along these roads. जब एक रोड जा रही वहाँ से आके दूसरी कन्वर्ज हो गई तो फिर वो इस तरह का पैटर्न डेवलप हो जाएगा. Cruciform settlements develop on the crossroads and houses extend in all the four directions. Cruciform में क्या होता है, जब वो क्रॉस रोड्स पे जब डेवलप हो गए सारे सेटलमेंट्स और यहाँ सब जगह मकान बन जाएंगे तो दिस विल बी क्रूसीफॉर्म. ऑल फोर डायरेक्शंस में मकान बन जाएंगे. यहाँ भी आ गए, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए. ठीक है ना. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. Now, rural settlements, they face lot many problems, especially in developing countries where they are very poorly equipped with infrastructure. So, some of the major problems rural settlements face is, first is supply of water. Supply of water is not adequate, and especially in developing countries. People in the villages, especially in the mountainous areas and arid areas, उन्हें बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक वॉक करके जाना पड़ता है पानी, ड्रिंकिंग वाटर लाने के लिए. सेकेंड, वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत हैं वहाँ पे कॉमन, जैसे कि कॉलरा है, जॉन्डिस है. फिर द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया स्पेशली, दे फेस कंडीशंस ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन. देन क्रॉप कल्टिवेशन जो सीक्वेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ इरिगेशन, तो वो भी उनका सीक्वेंस सफ़र करता है एंड प्रॉपर कल्टिवेशन कैन नॉट बी डन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर. देन द जनरल एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजेबल फैसिलिटीज, दे ऑल्सो कॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. द डिज़ाइन एंड यूज ऑफ बिल्डिंग मटीरियल्स ऑफ हाउसेज, it vary from one ecological region to another. The houses made up of mud, wood and thatch, they remain susceptible to damage during rains and floods. जब बहुत बरसात आती है या फ्लड्स आते हैं तो जो कच्चे मकान हैं वो बहुत जल्दी ढह जाते हैं या बह जाते हैं बरसात के पानी के साथ, तो उनको प्रॉपर मेंटेनेंस एवरी ईयर उन्हें करनी पड़ती है. वहीं अगर पक्के मकान हो तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. Most house designs are typically deficient in proper ventilation. उनमें proper ventilation भी नहीं होता है. Besides, the design of a house includes the animal shed along with its fodder stored within it. कि मकानों के अंदर ही उनमें एनिमल शेड्स बने होते हैं एक तरफ और उनका फॉडर स्टोर किया जाता है. This is purposely done to keep the domestic animals and their food properly protected from wild animals. वो इसलिए करते हैं कि उन एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स से बचाया जा सके, लेकिन उनकी फिर लिविंग कंडीशंस बहुत अनहाइजीनिक हो जाती है उस वजह से. Unmetalled roads, then lack of modern communication network, it creates a unique problem. कच्ची सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, तो वो एक अलग फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. During rainy season, the settlements remain cut off and pose serious difficulties in providing emergency services. स्पेशली जब रेनिंग सीजन होता है तो ऐसी रोड्स पे कभी इमरजेंसी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनको विलेजर्स को बहुत दिक्कत होती है. इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एडुकेट हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर लार्ज रूरल पॉपुलेशन. द प्रॉब्लम इज़ पर्टिकुलरली सीरियस when proper villagization has not taken place and houses are scattered over a large area. ये प्रॉब्लम और सीवियर हो जाती है जब वो हाउसेस बहुत स्कैटर्ड होते हैं, पास पास नहीं होते, तो फिर ये एजुकेशन की प्रॉब्लम, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब एक मेजर समस्या हो जाती है विलेजर्स के लिए. तो रूरल सेटलमेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है.